Hello, Assalamu alaikum everyone. Today we have to solve a question whose concept is about directly proportionality. So first of all, we need to understand कि directly proportional का मतलब क्या होता है. If we are given that any two or more than two quantities are directly proportional to each other, then what does it means? Let's say here we are given that z is directly proportional to y. It means that if the value of z is increasing, the value of y will also increase. Or if the value of z is decreasing, the value of y will also decrease. So as these both values z and y are directly proportional to each other, they are directly linked to each other. So कोई एक value भी बढ़ेगी तो the other one will also increase. Let's say if you are arranging a party, high tea party, आपके number of guests जितने ज़्यादा होंगे आपके expenses उतने ज़्यादा बढ़ेंगे. आपके नंबर ऑफ गेस्ट जितने कम होंगे आपके एक्सपेंसेस उतने कम होंगे. सो number of guests and the expenses are directly related to each other. So now let's see how we can solve this equation, this question. The first part is okay, we have to find an equation which connects y and z. So now the information is z is directly proportional to y. So while writing a solution, we have to take care of this statement. The first part is z directly proportional to y. इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपको स्टेटमेंट में given होता y is directly proportional to z, then your equation should be like this. So, but here we are given that z is directly proportional to y, so we choose this one. So with the proportionality sign we cannot solve, we cannot find any value or something. So we have to introduce equality sign here. To introduce that equality sign, we need some constant. So z is equals to ky. This is our equation number 1. Here k is unknown which we introduced ourselves. So now we are given with the values of z and y. By using these values we can find k. Z equals to 48 and y is equals to 6. Put these both values in the equation 1. 48 equals to k times 6. 48 divided by 6 equals to k. 6 ones are 6 eights are, and by this we get the value of k, which is equals to 8. Now put this value in equation number 1. Put in equation 1. So by putting this value in equation 1, the equation 1 will be like z equals to 8y. So our first part is done now. We generated an equation that connects z and y. So now let's move to the second part. In the second part, we have to draw a graph of z against y. So we got the equation. We just need to make a table by putting different values of dependent and the independent variable. उससे हम फिर ग्राफ ड्रा कर लेंगे. So let's say इससे पहले कि हम ग्राफ ड्रा करें, this is important how to draw a graph. To draw a graph, you should know the dependent variable and the independent variable. So in this equation, z equals to 8y. One of the variable is dependent and the other one is independent. Here y is independent variable and the z is dependent variable. How z depends upon y? Dependent variable. Now you can change the value of y by yourself. Like
by putting y equals to 0, z will be 0. By putting y equals to 1, z will be 8. By putting y equals to 2, z will be 16. So जैसे जैसे आप y की वैल्यू चेंज कर रहे हो वैसे ही z चेंज होता जा रहा है. सो क्लियरली z डिपेंड्स अपॉन y. आप y की वैल्यू जो चेंज करते हो z वैसे चेंज हो जाता है. सो लेट्स से हम एक इसका टेबल बना लेते हैं बाय टेकिंग 3 to 4 वैल्यूज़, जैसे हमें आइडिया हो जाए कि हमारा ग्राफ किस तरह से बनेगा. सो हम जब भी टेबल बनाते हैं उसकी फर्स्ट रो में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं और सेकेंड रो में हम डिपेंडेंट वेरिएबल को. So let's say by taking different values, for example हम पहले y 0 पुट करेंगे. So this is the equation. अगर मैं इस equation में y equals to 0 पुट करूँ, z equals to 8 into 0, z will be also 0. Let's say हम y equals to 1 पुट करते हैं, z equals to 8 into 1, z equals to 8. If y is 1, z is 8. If y is 2, let's say by putting y equals to 2, z will be 8 times 2, z equals to 16. This is 16 now. So you can see the pattern, 0, 8, 16. Then the next number will be 24. So this is the table. Now the only thing is left. We have to draw z axis and y axis. और हमें ये पॉइंट्स उस ग्राफ पे लेने हैं, पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, हमारा ग्राफ बन जाएगा. जी हमने एक z एक्सिस और y एक्सिस को बना लिया. द स्टेटमेंट वाज ड्रॉ ग्राफ z अगेंस्ट y. तो z शुड बी हियर एंड y विल बी द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. अब पॉइंट्स मैंने, हमारे पास y के पॉइंट्स थे 0, 1, 2, 3, तो मैंने वही पॉइंट्स ग्राफ पे चूज़ कर लिए. और जब हमने पुट की वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गया 0, 8, 16, 24. बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैंने पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए. अब द फर्स्ट पॉइंट इज 0, 0. व्हेन y इज 0, x इज आल्सो 0. अगर दोनों पॉइंट्स 0 हैं तो डेट विल बी द ओरिजिन हेयर. देन व्हेन y इज 1, y1 हमारा यहाँ पे है, y इज 1, z इज 8. तो 1 के अगेंस्ट हम जाएंगे 8 तक. सो दिस विल बी द पॉइंट we can mention here 1, 8. Then the second point is 2, 16. 2, 16. This is the exact point. You can write 2, 16 here. Then 3, 24. बिल्कुल इसके सामने आप चले जाओगे. This will be your third point. Similarly the next point will be 4, 32, 5, 40 and up to so on. लेकिन हमारे पास एक पैटर्न जनरेट हो गया, हमें पता चल गया कि हमारी लाइन जो है वो कहाँ पे आएगी. अब अगर हम इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर लें तो डेट विल बी द ग्राफ एंड डेट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन. जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो उसकी दो कंडीशंस होती हैं. द ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड द लाइन शुड पास फ्रॉम द ओरिजिन. अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आपकी फुलफिल नहीं हो रही तो यू आर मेकिंग सम मिस्टेक. बस इस चीज़ का ख्याल रखना है. बाकी उसके अलावा इसमें कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं होता. सो दिस इज़ योर लाइन. इसके साथ ही आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया. दोनों पार्ट्स आपके हो गए. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट्स. थैंक यू.